Hello class, I welcome you all to the wonderful session wherein myself Palak will be teaching you about the current affairs. जैसे कि आप सभी जानते हैं, we have the Punjab Patwari on 14th of May, which is really very extremely important examination for many of you. So here we'll be beginning with the current affairs session, जहाँ पे पहले हम मार्च को cover करेंगे in like 2 to 3 parts. Then we'll be moving in with April, and उसके बाद if we'll be done with March and April, we'll be going back to February and January. So I hope everyone is ready. Let's share the screen. So the screen is in front of you. Let us begin with it. So what do we have to do in here now? So we have, first of all, Reliance Jio has climbed to, give me a minute. Give me a minute. So yes, here is the first screen in front of us. We can clearly see that Reliance Jio has climbed its rank, जहाँ पे up from 5th place last year, जहाँ पे वो last year 5th place पे था in the list of top 10 strongest telecom brands in the world की अगर हम बात करेंगे. So here you have to mark Reliance Jio as an important thing. Next है हमारा Tata Group owned Air India's order for a record 470 aircraft from Airbus and Boeing company, that is Co, will be at the list price of $70 billion. But what is of the main importance अगर हम इस चीज की बात करेंगे, इस न्यूज की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि एयर इंडिया इज समवेयर रिलेटेड टू एयरबस एंड बोइंग. ये क्वेश्चन आ सकता है. दिस number and this amount is not that very important for Punjab Patwari की अगर हम बात करेंगे. Okay, next is Air India owned by the Tata Group will discontinue Vistara brand. As many of you might know कि Vistara is a name of an airline जिसको वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि जो एयर इंडिया का मर्जर है वो हो रहा है विद टाटा सिया. नेक्स्ट इज इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ा एग्जांपल है गूगल पे. इट इज अ यूपीआई इंटरफेस एज एवरीवन ऑफ यू माइट नो, is shortly to be connected to the comparable networks in Indonesia, Mauritius, and UAE, means your United Arab Emirates. This occurs a week after Singapore's PayNow launched a cross-border connection for real-time digital payments. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि Google Pay we can use in India. Nationwide है. आप किसी भी जगह पे शॉपिंग करने जाते हैं, you do any recharge or anything, you use Google Pay. That is a UPI. आपके पास एक प्लेटफॉर्म है. उसी तरीके से यूपीआई का जो है यहाँ पे जो यूपीआई इंडिया यूपीआई है ये हमारा वर्ल्ड में चलने लग जाएगा इन द कंट्रीज दैट इज इंडोनेशिया, मॉरिशस एंड यूएई. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट शीट. गिव मी अ मिनट. सो PhonePe has announced the debut of the service that will enable its Indian users who are traveling overseas to pay foreign business using the unified payment interface. जो कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा है इसके बारे में. तो what are they telling us? यहाँ पे ये बात हो रही है कि हमने जो भी फोन पे के बारे में, if we see here, फोन पे जो है वो क्या है, यूनिफाइड इंटरफेस है. बट वो क्या कह रहे हैं, जो फोन पे ने अनाउंस क्या किया है कि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा इंडियन यूजर्स को. कहाँ पे? ओवरसीज में, ट्रैवलिंग ओवरसीज टू द फॉरेन बिजनेसेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पीछे पढ़ा यूपीआई इंडोनेशिया, मॉरिशस एंड यूएई में यूपीआई इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर एवरीवन. उसी तरीके से जो फोन पे है दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंपनी जो यूनिफाइड ये पेमेंट इंटरफेस दैट इज योर यूपीआई को जो भी ट्रैवल कर रहा है आउटसाइड, इट इज गोइंग टू हेल्प फॉर द बिजनेसेस. नेक्स्ट इज द एयरटेल पेमेंट बैंक अनाउंस्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स करंट अकाउंट. दैट इज current account का name here plays a very important role. And what is the name? It is biz खाता. ठीक है, इसको आपने क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि biz खाता is related to which bank? So for every one of you, you need to know it is Airtel Payments Bank जो ऑफर करता है स्मॉल बिजनेस एंड बिजनेस पार्टनर्स अक्रॉस द नेशन को फॉर व्हाट? फॉर द फास्ट एक्टिवेशन एंड लिमिटलेस ट्रांजैक्शन के लिए. Next is the Edelweiss General Insurance has rebranded itself as Zuno General Insurance Limited, जिसको बोलते हैं Zuno GI, जो कि क्या है, एक न्यू एज डिजिटल इंश्योरर है विद एन एस्पिरेशन to reimagine and redefine insurance to make it easy, friendly and transparent. Basically nothing you need to know, you just need to know that Edelweiss जो जनरल इंश्योरेंस था, इट्स बीन चेंज्ड. उसका जो नाम है उसका नाम चेंज करके हो गया है Zuno GI, दैट इज जनरल इंश्योरेंस. ठीक है. Mobiquick has become
first fintech apps to support RuPay credit cards on UPI. UPI is playing a very important role for the month of March. वैसे भी it is playing a very important role in our lives, right? तो यहाँ पे क्या है, मोबिलविक क्या है जो ऐसी फर्स्ट फिनटेक ऐप जो है हमारे पास बनी है जो कि सपोर्ट कर रही है फॉर द रुपे क्रेडिट कार्ड्स. Okay, so the question can be, you have to name the first fintech apps to support RuPay credit card on UPI platform. So during 2021 to 2022, India received foreign inward remittances of USD. It is not important. You are not required to learn the amount which has been the highest ever inward remittance received in a single year. So what is important here? You need to just know that India has received the maximum amount of remittances in year 21 to 22. ओके सो ये हमारा जो न्यूज है, आपको करने का तरीका क्या फॉलो करना है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग. हर न्यूज को आपने लिखना है सो दैट बिफोर गोइंग इन विद योर एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ जो आपने शीट पकड़ी है उसको रिवाइज करना है, बिकॉज एट दैट वेरी टाइम टू अगेन सी द वीडियो इज समवेयर डिफिकल्ट. अगली शीट हम देखेंगे जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इंडिया की, हैज बीन अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसमें सिर्फ इतना याद करना है कि नेशनल मेट्रो रेल knowledge of center hai, it is related to GA Infra Private Limited. That's all. The center will be located at Vishwavidyalaya Metro Station in Delhi and built on the public-private partnership model. Model का नाम usually नहीं पूछा जाता है, but still you can remember it as PPP model, that is public-private partnership. इसके अंदर National Metro Rail Knowledge Center related with GA Infra Private Limited. So the next one here is a memorandum of understanding, that is the MOU, will be signed by Rolls-Royce Marine North America with Kalyani Strategic Services Limited, a 100% subsidiary of Bharat Forge, to investigate the possibility of KSSL serving as an in-country provider for the propeller sales in Indian market. Least important है इसके अंदर, अगर आपको कुछ याद रखना है तो ये रखना है कि Rolls रॉयस मेरिन इन नॉर्थ अमेरिका और कल्याणी स्ट्रैटेजिक सर्विसेज लिमिटेड का एक बॉन्ड हुआ था, एक एमओयू साइन हुआ था. नथिंग एज यू नीड टू नो. बिल गेट्स हैज एक्वायर्ड अ मिनॉरिटी स्टेक इन Heineken Holding NV, the controlling shareholder of the world's second largest brewer. आपको अगेन अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि बिल गेट्स ने एक्वायर कर लिया Heineken Holding. So ये again what you have to do, the pattern I have already told you, आपको सब कुछ नोट करना है so that it becomes very easy for you to revise. Okay, give me a minute please. So अश्नीर ग्रोवर के बारे में न्यूज है. द शार्क टैंक पे जो ये थे शार्क थे, मे बी यू रिमेंबर हिम. So he launched something, and what is he launched? A new cricket focused fantasy sports app. So क्या नाम है? क्रिक पे. क्योंकि he is somewhere related to फोन पे, if you know, sorry, भारत पे if you know. So यहाँ पे क्या है? अश्नीर ग्रोवर is related with क्रिक प्ले, क्रिकेट से बेसिकली रिलेटेड इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है जिसके लिए he is known in the news for March. ठीक है, तो हमने ये याद कर लिया और हमने ये याद कर लिया, ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर. नेक्स्ट क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन? आफ्टर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स Limited withdrew from acquiring Bisleri International, Ramesh Chauhan, the chairman of the company, announced that his daughter Jayanti Chauhan will now lead the bottled water company. जिसका क्या नाम है? bottled water company को यहाँ पे हम किससे रिलेट कर रहे हैं? Bisleri, right? तो यहाँ पे SJVN Limited, a state-owned company, has secured rupees 915 crore in green financing from Japan Bank for International Cooperation. Now यहाँ पे आ सकता है कि ग्रीन फाइनेंसिंग जो हुई है वो कहां से हुई है? दैट इज जापान के एक बैंक से जिसका नाम है JBIC, दैट इज जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन. किस लिए? टू सपोर्ट इट्स 90 MW मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश एंड 100 मेगावाट. ये आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. यू हैव टू नो कि ग्रीन फाइनेंसिंग हुई थी थ्रू विच बैंक हुई थी, दैट्स ऑल. अगला है Herbalife, a leading global nutrition company, many of you might already know, has teamed up with the Board of Control for Cricket in India, that is BCCI. Again, the full form is very important, आपको पता होना चाहिए.
यूजुअली हर एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म आता है, बट पंजाब के अगर हम एग्जाम्स की बात करेंगे तो एक नहीं दो क्वेश्चंस यूजुअल केस में देखे जाते हैं, वन रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड वन रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। तो कहीं से भी आ सकता है, वी हैव टू डू आवर लेवल बेस्ट, राइट? सो हमने यहाँ पे बीसीसीआई को याद कर लिया है, विच इज बीइंग रिलेटेड विद हर्बल लाइफ। ठीक है, तो टू बिकम द an official partner for Tata Indian Premier League, that is IPL, for which season? For 2023 season. I hope it is clear to everyone. Fine. तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स होता है, एक रिपोर्ट होती है, काफी सारी रिपोर्ट्स होती हैं, एंड माइंडेड यू ऑलवेज गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम द रिपोर्ट्स फ्रॉम द इंडेक्स, जरूर आता है क्वेश्चन। तो अफगानिस्तान रिमेन्स द कंट्री मोस्ट इंपैक्टेड बाय टेररिज्म फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब बराबर से हर साल फोर्थ जो ईयर था उसमें भी, ये फोर्थ ईयर है, इसके अंदर भी अफगानिस्तान ने ही रैंक नंबर 1 किया है, despite attacks and deaths falling by 75% and 58% respectively, कि there is a decrease in the attacks and deaths, पर फिर भी अफगानिस्तान remains number 1। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो नंबर 1 याद करना, और दूसरा हमारे इंडिया का रैंक याद करना। तो इंडिया का रैंक 13 है, नंबर 1 ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, अफगानिस्तान का है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया रैंक 13 ऑन द इंडेक्स, मार्किंग ओनली अ मार्जिनल डिक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इट्स ओके है ना, हमें सिर्फ डेट्स याद करनी थी, दैट वी हैव नंबर याद करना था फर्स्ट का और इंडिया का, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शीट। तो 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन। नाउ यू नीड टू नो वन थिंग, यहाँ पे मिनिस्टर्स के नाम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे हमने किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर द स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हुज नेम इज डॉक्टर एल मुरुगन, presented the 8th National Photography Awards in New Delhi. A total of 13 awards were presented during the ceremony today, including 6 each in professional and amateur category. Least important है कि कितने awards किस category को मिले हैं। अब सबसे important चीज जो है हमारी वो ये है कि the theme of the professional category was life and water. The most important thing. अगली important चीज, अगर यहाँ पे प्रोफेशनल कैटेगरी की बात करेंगे, पर अगर एमेच्योर की करेंगे तो यहाँ पे क्या है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। That's all. इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। Now we'll be moving on to the second part of it, मतलब second last news I hope it is going to be। हाँ जी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। सो द 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड, एंड अगेन हर बार की तरह हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज फिनलैंड, 6th ईयर इन अ रो, कॉन्जिक्यूटिवली 6th ईयर में। और डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल एंड नीदरलैंड्स आर द नेक्स्ट हैप्पीएस्ट कंट्री। इसके अंदर अब हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे देख लिया कि रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द मेन लाइफ इवैल्यूएशन क्वेश्चन इन द गैलप वर्ल्ड पोल। तो इसमें आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बस हमने इसके अंदर जितना पढ़ना था वो ये था कि फिनलैंड है जो उसका जो रैंक है वो नंबर 1 है। ओके, मूविंग ऑन नाउ टू द नेक्स्ट न्यूज, लेट अस सी। तो यहाँ पे time list of world's greatest places of 2023 released, 2 Indian places makes on the list। तो हमें क्या करना है, जो इंडियन चीजें इंडियन जो आई हैं हमें वो याद करनी है, अदरवाइज हमें और जगहों को याद करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज मयूरभंज एंड लद्दाख जो चूज किए गए हैं फॉर द endangered tigers and historic temples as well as their adventures and cuisine respectively। अब है क्या यहाँ पे, ये टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस इन 2023 में आए हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं, बट दीज आर द ओनली थिंग्स दैट वी नीड टू नो। अगर मयूरभंज रीजन की बात करेंगे तो इट इज इन ओडिशा, और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो उसके अंदर इन दोनों ने ही वहां पे रैंक अपना बनाया है। सो let us see if we have any other news in row। So yes, India 8th most polluted country in the world। किसके थ्रू है हमें ये इंफॉर्मेशन मिली, स्विस कंपनी IQ Air। So according to the global air quality study published by the Swiss company IQ Air, India fell in the 5th to the 8th most polluted country। अब देखो कैसे वो वहां से रैंक बढ़ गया है। So the research shows that the PM 2.5 level in the most polluted Indian cities is, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ बस आपको ये याद करने की जरूरत है कि ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पब्लिश कौन करता है, तो स्विस कंपनी IQ Air, जहां पे इंडिया फेल फ्रॉम 5th टू द 8th रैंक। ठीक है, पहले 5th था अब 8th। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। आपको रैंक से याद करने हैं, नथिंग एल्स इज मोर इम्पोर्टेंट ओवर हियर। So Oscars 2023, the 95th
Academy Awards, the Oscars Award 2023 are finally announced, and the fans are excited to know India fares at how. कैसे है ना? So at Oscars Award 2023, the Academy Awards or the Oscar Awards, which are originally, इसमें आ सकता है कि वो पहली बार हुआ कब था Oscar Award 1929. Otherwise क्या questions आ सकते हैं कि Oscar जीता किसने? But आपको जो चीज ध्यान रखनी है सबसे ज्यादा, वी कांट लर्न ऑल द नेम्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इफ यू कैन डू इट इज अ वेरी गुड थिंग, अदरवाइज आपको मैं ये बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हो, द ऑस्कर्स अवार्ड 2023 विल बी हेल्ड ऑन March 13, डेट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन लॉस एंजल्स डॉल्बी थिएटर, दैट वाज इंपॉर्टेंट ओनली दिस मच। ठीक है, तो अगली जो हमारी न्यूज है वो है आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, ऑस्ट्रेलिया ने वन किया है, दैट्स ऑल फॉर द सिक्स्थ टाइम व्हेन दे बीट साउथ अफ्रीका बाय 19 रन्स। लीस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये याद करना कि ऑस्ट्रेलिया वन द वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप, दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। And with this class, we come to the end of the session. हमने part 1 को यहाँ complete कर लिया है. I want every one of you to tell me कि आपको इतना इतना ही टाइम का चाहिए वीडियो, we can increase it, we can decrease it, but make sure you have to make the notes of each and every news we are covering here, because आप 12 days में आपका एग्जाम है, so you need to cover it all very well. ठीक है, and we'll be continuing with current affairs इस एग्जाम के बाद भी, if you everyone will be enjoying it. See you in the next class. Bye bye.